Okay, so yeah, yesterday we covered SQL is a structured query language used to fetch the data stored in the database. Then, in order to insert the data into the database, then update the whatever the data we inserted. So that is the whole purpose of SQL. So, and then so Power BI guys, whatever the work Power BI guys do, no. So they will also use the SQL to fetch the data. They will build the query and they will fetch the data from databases using the SQL only. So for the power from the Power BI point of view also, SQL is very much important. So yes, as discussed yesterday, we have SQL Server from Microsoft, which we will be using today. But this is SQL database. There are some NoSQL databases as well, which is like MongoDB, Cassandra, Neo4j, and again there are like multiple cloud service providers like AWS, Azure, GCP, who will provide the SQL Server instances, SQL instances on the cloud itself. So this is just a similar SQL. What you are seeing here, this is the similar SQL, but it is just hosted on the cloud environment. So you no need to do all the installation, and you no need to have the specific RAM in order to store this data, and your system requirement is not required. You just need to have the cloud account, and they will take care. So it is like fully managed. So we need not to worry about it. So let's get started today with the data types. So let's start with the we will start with first string or characteristic. Okay, then we have numeric data types, and then so let's do this first. String or characteristic means, suppose we have this name as Uttareshwar. So let's say another example now. Suppose there is Harsh. How do you think Harsh is stored in this database? So in order to store the Harsh name, so we need to define that, but that as a, suppose this is name, so we will define that as a name. But for storing that, it should understand what is Harsh and how I am going to store into the database. So Harsh is, we can understand it is a characteristics, ABCD characteristics. So it is, so they are named like, there are different types in the here string, like char, then varchar, then n varchar. Okay, n varchar. Okay, char means simple characteristic, and then variable length characteristic, and n variable length characteristic. So these are the three major data types in the string data type, or string, or we can say it as a characteristic. That's a better name, string or characteristic. Then in the numeric we have simply integers, right? Int. And in the int also there are like different. So these are not used though, but tiny int, and then big int, big int. Inside the int we have tiny int, big int, and just a simple int as it is, like int. And then we have bit also. Bit it will store just like one or two, just like we have the flags, right? If particular, so we will cover it later. Okay, just keep in the mind we have bit also. So we have again a decimals, and again we have floats. There are like these many data types in the numeric. So let's explore this one by one. So let's starting from the characteristics or string data type. So in string data type we have, suppose we want to store this. Suppose uh, let's take from the example. Okay, let's check. We have, these are the different databases. I will tell you later. But inside the temp DB, okay.
You will see here what are the different databases. So just don't get annoyed to this, because we will cover it how this comes and show. So we will cover it, but just to have the understanding. So we will go to the new query, option. Let's skip table as. Okay, so just don't get bothered to this one. This is the simple steps. I will tell you how to do this, but just to understand from the data type point of view, just understand these things, right? So here if you can see, I have created a table. So this is simple, just to understand create table script, how we can create a particular table. Okay, here you can see this is the employee table. Okay, employee table. Inside the employee table we have ID, and here it is defined as int, right? What I mentioned you here. So here emp name, it is defined as varchar, and here is something 100, and here is null, here is null. Just don't focus on these things for now, we will cover it. So salary, here salary is in int, and then city it is again in varchar, and why it is here 100, and inside this int why don't we have 100, so we will cover it. And then here is the primary or something. So don't get like overburdened with this, we will cover it thoroughly. So let's start from employee. Okay, this is called query, and this is written in the SQL language. So that's itself is a SQL, so structured query language. So that is this, the way which we are writing the query. So this language is called a structured query language. This is the data is structured, so in order to query that data you are using a language that is structured query language. So here you will see there is ID, and it has values like 1 2 3 4 5 6. Here is emp name. Here what we have, emp name, it is Tom, Jack, Anna, Emma, and then their salary, respect to salary we have 700 something, or then city, this is Kalam, this is Pune, this is going for something. We have this, but how this database will get to know what kind of data I am inserting into this, and what data will not be allowed to insert. Okay, so accordingly we have then configured these as a data types. So let's get back to the data type. So hers is a name, right? So how will we define, how we will define it hers as integer? No, it is string, it is name. We will not define it as an integer. Integer will be like something 1 or 2 or 3, or then suppose there is 1000 or 10,000 of salary to the someone, so that will be under the integers, numeric data types, right? Here in the string or character data type we will be having this like harsh. So harsh, we will suppose there is a name column. So we will take one whole data base example. So name column, inside the name there are like hers, and then we have Anurag, and then we have Salman. So how this database will know कि भाई इसमें क्या स्टोर करना है. इसमें अगर इसमें इंटीजर आया तो मैं इसको मैं लूँगा नहीं भाई, मेरे को बस यही चाहिए, हर्ष चाहिए, अनुराग चाहिए, ऐसे वाले ही चाहिए. अगर तुम मेरे को कुछ अलग दे दोगे तो मैं नहीं लूँगा. तो उनका भी ऐसा डिसाइडेड रहता है. तो दिस इज सिंपल जस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप. सो नेम, सपोज नेम वी विल डिफाइन ऑलवेज इन द characters, right? So in the character or string, so we have data type here as a char, first one, char. And then we have another, what is the difference between char and varchar? Now we have varchar also, and we have again n varchar. This seems to be similar, right? This is same, char, varchar, n varchar. This seems to be same, but how they differ? Does anyone know how memory is stored inside the any of the, how exactly how exactly memory is handled? So suppose we have this,
Okay. Okay, so good one. Let me complete this one. So we have different. Suppose we define it as a char, and we give length as a, suppose, 100 or maybe 10, and then we here we give the varchar, and again we give it as a 10, and then in varchar it will give, suppose, again 10. So what exactly is the basic difference in between this char, varchar, and varchar? So how, let's see first how memory is, how computer store in the memory. Let's take one example. Suppose there is one block. Okay, let's take this one where we can take the block. Okay, so let's take there is 1 and 0, again 1, and let's take 0, and we or just take a example from A. So let's relate with the char and varchar C and D. These are 4 blocks, right? And if you define this as a, suppose maybe, suppose you define this as a name name with characteristic 10. So name with the characteristic 10, you define this. And but if you see, it has consumed only four four spaces. Suppose assume one block as a one space. Okay, so it has, we define it as a 10, but how it is utilizing? So it will not, it is not like, suppose we define name with the characteristic length. This is basically 10 is the length. 10 is the length. Everywhere 10 is the length, and we never know like how names will come. Here Harsh is smaller name, Anurag is smaller name, Salman is smaller name, but sometimes there might come like my name, Uttareshwar. Okay, or maybe some major names. Like South people have major names. So assume that name comes here, and that length get increased. So suppose Uttareshwaram, Swaram, something is the like more than 10, more than 10 characteristic it is, right? You can see it's more than characteristics. What then database will show, oh, my length is 10 to 10 only, how I can take this huge number of huge name? So it will throw an error. He will say, ना ना, मेरी तो लेंथ बाई 10 ही है, मेरे को बस 10 ही दे दो. Okay, so that's how memory is configured. So it is stored in the blocks, but from our point of view, if we see char, varchar, and varchar, char will see, say my length is 10, and if you assign, give me like a 4 letter name, or you may give, you might give me the 10 letter name, I will assume this whole 10 byte. I will assume, I will consume this whole 10 bytes of space. But this will happen in case of char. But if you see, we only consume 4 bits, but still it is taking our 10 byte of memory. It is currently we are just dealing with the bytes of data, right? So you will not find it very fancy, or it is consuming huge amount of data. It will not, you will not find it fancy. But suppose there are like huge amount of data. Yesterday we discussed how millions or trillions of records gets created for a particular day. So yesterday I took the example of Flipkart, and how data is a million, uh, trillion or million number of records are generated a day. How yesterday I thoroughly explained them. So and at that time it will matter, like suppose you are not defining it as a you are defining it as a char, and you are not consuming all the spaces which is required. So then what is the point of this, allocating this amount of memory? So there came another data type. So varchar, so it is like static allocation. In here we will note this as a static allocation. So whatever until we covered now, that is called a static allocation. मतलब तुम मेरे को कितना भी डेटा दो,
मैं उतना ही 10 बाइट ही कंज्यूम करूँगा, और 10 बाइट के ऊपर अगर दोगे तो मैं लूँगा ही नहीं, आई विल थ्रो एक्सेप्शन। आप अपने हिसाब से देख लो, या फिर मेरी लेंथ बढ़ाओ या फिर एरर ले लो, दोनों में से एक ले लो। तो दिस इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, static memory allocation, and this is just a simple funda of how memory is consumed uh, in the computers or applications. Okay, and then there comes another varchar. Varchar will say okay, ये तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर रहा, क्या मैं लूँगा भाई, मैं तो डायनेमिक भी लूँगा। ओके, मुझे चलेगा, तुम स्टैटिक दे दो या डायनेमिक दे दो, मुझे मुझे सब चलेगा। तो वो बोलेगा कि भाई मैं, मेरा लेंथ सपोज तुम दे रहे हो कि 10 बाइट का, यहाँ पे हमने वैरकर 10 दिया है। ओके, वैरकर 10 दे दिया, तो मैं जितना ब्लॉक्स का नाम है, सपोज यू सिमिलरली वी हैव गिव हियर द 4 बाइट्स ऑफ नेम, so he will say, oh, it's just a 4 byte name, I will not consume all 10, I will, he was saying I will consume all the 10 bytes irrespective of the what data I am getting, I will consume all। he will say हाँ ना ना, हम तो भाई उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना हमको दिया गया है। तो दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जितना तुमको यूज करना है उतना ही करो। Nowadays nobody use this care, but in order to understand how memory and static allocation and how data is managed, in order to understand that, I explicitly took this as a care. Nobody use this care as a data type nowadays, so there comes the dynamic memory allocation। मुझे जितना तुम लोगे मैं उतना ही कंज्यूम करूँगा। ओके, that's where comes the dynamic memory allocation। और ये बोल रहा था कि मैं जितने यहाँ पे जितने बिट्स है उतना ही कंज्यूम करूँगा। फिर ये बोलता है नहीं यार, ये तो ठीक है, तो तुम्हारा भी तो सही चल रहा है, तो मैं क्या काम करूँगा। ये बोलता है कि भाई तुम्हारा तो कैर कैर वैर कैर यहाँ तक ले लेते हैं, कि कैर बोलेगा कि मैं, मेरे को यहाँ तक ये डेटा चलेगा। कौन सा डेटा चलेगा, मेरे को चलेगा A to Z और 0 to 9, इस टाइप का डेटा चलेगा मेरे को। तो वैरकर भी बोला हाँ ये तो मैं भी कर लूँगा, मेरे को भी ये चलेगा। तो एन वैरकर बोलेगा आप दोनों भी ये कर लोगे तो मैं क्या कर लूँगा। तो फिर ये बोला मैं कुछ अलग करता हूँ। ये बोला कि मेरे पास तुम डायनेमिक एलोकेशन भी लेके आओ और मैं अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर लूँगा। अलग टाइप का मीन्स सपोज कभी कभी तुम्हारे डेटाबेस में इफ़ यू वर्क फॉर अनदर क्लाइंट्स लाइक चाइनीज क्लाइंट और मे बी सपोज ये तो इंग्लिश में लिखे है A to Z लिखा है। सपोज कोई मराठी में एंट्री कर देता कि भाई मेरा नाम मैं मराठी में लिखूंगा, अभी मेरे को पता नहीं कि तुम कैसे स्टोर कर लोगे, मेरा नाम मेरे को मराठी में चाहिए, मेरे को पता नहीं। तो वो बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है, मैं मराठी भी स्टोर कर लूँगा। तो उस फॉर दैट पर्पज इट केम एज एन वैरकर। तो बोलेगा मैं कुछ भी स्टोर कर लूँगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, मेरा ये कंडीशन है कि मैं एक 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 लेटर के लिए 2 ब्लॉक्स कंज्यूम करूँगा। मतलब मराठी में अभी कैसे लिखते हैं, आई डोंट नो ऑन दिस लैपटॉप, आई डोंट नो हाउ टू राइट इन मराठी। तो बट वो बोलेगा कि भाई मैं तो अगर एक नाम लिखना है कि उत्तरेश्वर का ऊ लिखना है, तो बस आई विल जस्ट सिंपली राइट इन यू, बट यू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ यू, इट्स नॉट यू बट इट इज ऊ, assume, you have to assume, I don't have any choice। so he will say मैं सब कर लूँगा, बस मेरे को ये दे दो कि मुझे डायनामिक एलोकेशन चलेगा, लेकिन मैं एक लेटर स्टोर करने के लिए 2 बिट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करूँगा। तो यहाँ पे तो सो दैट इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दिस। आई विल स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा, ये भी चलेगा इसमें, ये ऐसे नहीं कि ये नहीं चलेगा, ये भी इसमें चलेगा। इसमें तो कुछ भी डालो, मेरे को सब चले, एनी काइंड ऑफ डेटा, जस्ट
I will consume consume 2 bytes 2 bytes for 2 bytes for each characters. Okay, so that is the basic difference between it's not a basic this is very important, you know, for the fresher guys or someone who is starting in career, no, they will definitely get this question around this. So they will have to prepare, they will ask what is difference between char varchar and varchar, and when you will use the char varchar and varchar. So that is, these are the like string or characteristic data type, and then let's come back again to the whatever we were seeing. So here I have created a table created. This is very simple language, guys. SQL is very simple. It is just a English like a language. We just have to understand and write it. Okay, so meeting is there now. Yes. How many it is consuming? 120. That's so it is not today it will not crash. So what we were discussing, हाँ तो ये वाला कैर वैर कैर और एन वैर कैर का पूरा डिफरेंस हो गया. तो फिर बाद में आ जाते हैं. So they will ask this, what is difference between, even for 3 years of experience they will ask this question, what is difference between where can and in where can. So they will ask this question because most of the people don't know how the memory is allocated and how why this in where can might be used and how dynamic and static memory allocation, because these are the behind the scenes, though nobody is going to tell you this how this is done. So these are the behind the scenes. Okay, so I think that is pretty clear from this. And I was showing you the here in the create table, this is create table script, and where I have defined like employee name emp name as varchar, and I have given here the length of 100. So I don't employee name. So जितना मतलब यहाँ पे let's say ईमा का है कि वो, although I have defined this as 100, ईमा will take just a EWMA, so 4 bytes of memory, so EMA will take only. So that's how it is managed. Okay, then come to the next data type. These are like string or characteristic data type. We have then numeric data type. Clear, guys? I think this is the ultimate explanation I gave for like 30 minutes. I am explaining. Clear. Okay, thank you. So let's move towards the numeric data type. Numeric data type. Okay, and inside the numeric data type we have, let's start from the uh, tiny int, or we call it, so let's start from the bit. Okay, so I will tell you which are used and which are not used. So this char is never used in the industry, so you can mark it as just a example. So it is never used, char is never used. So mostly we use the varchar, and very rarely we define the n varchar. So unless and until there are like a requirement of this. So in numeric data types, let's start with the bit, and then we have tiny int, tiny int, and then uh, which one is that again? Tiny big int, yeah, is simple int, and then we have big int, then int is covered, then decimal we can say decimal is there, and then there is float data type. Okay, numeric data type. So bit, so this one bit, tiny int, these are not used much. So but I will tell you the basic what is different. So bit, suppose you want to generate one flag. Okay, suppose there is like a column, suppose student is uh, present in school. Okay, in school. So just
सपोज वी आर टेकिंग क्या बोलते हैं उसको, हाजिरी लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटी ले रहे हैं, और उसमें ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के नेम है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किए ये, और वी जस्ट वांट टू मार्क इट एज कि भाई ये स्टूडेंट है, फिर ये बी स्टूडेंट है, ही इज प्रेजेंट और नॉट, इन ऑर्डर टू make it as suppose if he is present then we will mark it as a 1, and then if he is not present we will mark it as a 0, here we will again mark it as a 1. So what why we could have done this in the here where char also or char also, right? But why we are using here the bit data type? So because char will take all this a to z or 0 to 9, char itself will take the a to z or 0 to 9, but why we are going to this uh, bit? So these are not much used, but still you can take in the consideration tiny int, big int, sorry, bit. So you want minimal memory consumption, you just have to give one flag for this present or something, because flags are anywhere वेरी वेरी मतलब कि बहुत जगह फ्लैग्स यूज़ करते हैं कि भाई ये बंदा प्रेजेंट है, कि मतलब ये रिकॉर्ड जब हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं ना, तो उसका भी उसके लिए भी ये रखते हैं, फ्लैग रखते हैं कि ये हिस्टोरिकल है कि नहीं है, ये प्रेजेंट है कि नहीं है, ये ऐसा क्या है कि, तो उसके लिए इसको बोलते हैं फ्लैग्स बनाते हैं। तो फ्लैग्स बनाने के लिए हम पर्टिकुलरली बिट टाइप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम ना हो जाए और डेटा बेस पे ज़्यादा लोड नहीं आ जाए। क्योंकि क्या होता है, जब ये तो डेटा तुम रख रहे हो, लेकिन जब बाद में डेटा वाप निकालना है ना, एट दैट टाइम वी विल जॉइन मल्टीपल टेबल्स टुगेदर, बहुत सारे टेबल्स पे ज्वाइन लगते हैं, और 4-5 टेबल ज्वाइन करके उसमें से डेटा लाते हैं। तो एट दैट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिस टेबल्स क्वेरी गेट्स हेवी, और जितनी हेवी क्वेरी बन जाएगी तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना डेटा ज़्यादा स्कैन होगा, और जितना नाउअडेज एवरीथिंग इज मूव टुवर्ड द क्लाउड, और जितना ज़्यादा डेटा स्कैन होगा ना, उतना बिल ज़्यादा आता है। सो ये जो SQL सर्वर है ना, इसमें जो भी तुम क्वेरी कर रहे हो ना, और जितना सपोज दिस इज वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ डेटा वी आर स्कैनिंग, बट अगर तुम टीबी में डेटा रहता है, टेराबाइट्स ऑफ डेटा, वन क्वेरी विल वन क्वेरी विल पुल द टेराबाइट्स ऑफ डेटा, एंड उतना अगर डेटा आ जाता है तो उस पर तुम्हारा जो चल रहा है ना क्वेरी, तो उसके हिसाब से आपका बिल आ जाता है कि इसने, वो बोलेगा कि इसने 1 TB ऑफ डेटा स्कैन कर दिया, तो इसका $1 आ जाएगा। तो उस हिसाब से अभी चल रहा है। पहले कैसे थे कि ऑन प्रीमाइसेस का ये दो कंसेप्ट होते हैं, या तो एक क्लाउड पे होता है। सो लेट्स कवर दिस इन द एडिशन नॉलेज टुडे। एक दो होते हैं, रिसोर्सेस या फिर एप्लीकेशंस मान लो, एप्लीकेशंस ही मान लो, एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पे होता है कि ऑन प्रीमाइसेस, और दूसरा सॉरी ऑन प्रीमाइसेस, और दूसरा होता है होस्टेड ऑन क्लाउड। क्लाउड में भी फिर आता है कि मैं फुल्ली मैनेज है कि मैनेज सर्विसेज है, वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि ऑन प्रीमाइसेस क्या होता है। सपोज मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है, ओके, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए मुझे बहुत सारी रैम लगी होगी, इट इज़ 7 to 8 GB ऑफ एप्लीकेशन, सो बहुत सारी रैम लगी होगी, उसका इंस्टॉलेशन करना पड़ा मुझे, और इसका मेंटेनेंस भी रखना पड़ेगा मुझे। तो this comes under the on premises. Suppose this is my on premises database, SQL Server on premises database, तो इसका पूरा मुझे, या मतलब नहीं क्या, अभी दिस इज फ्री एडिशन, बट जो जितने भी इंस्टेंसेस इसके मैं यूज़ करूँगा, तो उसके हिसाब से मुझे वो बोलेगा कि भाई इसका 1 पेटाबाइट का इंस्टेंस लेना है मुझे, तो उसके हिसाब से मुझे वो माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज हैपन्स ऑन द डेटाबेसेस ऑन प्रीमाइसेस। नाउ जस्ट गेट द अंडरस्टैंड, ऑन प्रीमाइसेस मतलब जहाँ पे तुमको सब देखना है कि तुम्हारा ये करना है, इंस्टॉलेशन करना है, और फिर उसका पैसा वैसा भी जब एप्लीकेशन का जो ये होता है ना, क्या क्या बोलते हैं,
एप्लीकेशन जब लेते हैं उसका लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस का उसको पैसा देना पड़ता है कि ये तो हम SQL सर्वर ले रहे हैं तुम्हारा, तो उसका मेरे को पैसा दो, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा। तो वो पैसा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। It is not just $1 or $2. There are like huge amount of bills they will generate for you and company have to pay. But here cloud पे क्या होता है, मैंने बताया कि सपोज यहाँ पे थे, यहाँ पे क्लाउड पे थे ना, कल दिखाया, हाँ क्लाउड पे सपोज आर डी एस एक AWS क्लाउड पे चला रहे हो RDS, तो RDS बोलेगा तुम जितना डेटा तुमको स्कैन करना है कर लो, जितना स्टोर करना है कर लो, बस मुझे उसके उसके हिसाब से पैसे दे दो। वो बोलेगा कि अगर तुम ये 1 TB ऑफ डेटा स्कैन कर रहे हो ना, मेरा RDS में रखा हुआ, तो मेरे को $10 दे दो, चलो तुम, बाकी तुमको कुछ लेना नहीं है, कुछ लाइसेंस लेना नहीं है, कुछ एप्लीकेशन लेना नहीं है, आना है बस मेरा जो SQL है उसमें डेटा डालो और जब चाहे निकाल लो, बस मेरे को पैसे दे दो। जितना तुम डेटा डालोगे उसका स्टोरेज का, उसका क्वेरी करने का, उसका डेटा निकालने का मेरे को पैसा लगेगा। सो दैट इज क्लाउड। You don't have to do like support, maintenance and licensing. You don't have to do, but the amount of cost you have to pay, that is huge. So nowadays सपोज ये RDS पे कोई पहले तो हमारा था, मतलब अभी हमारे एप्लीकेशन कुछ ऑन प्रीमाइसेस भी है और कुछ क्लाउड पे भी है, तो हम माइग्रेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या सीन होता है कि हमें आदत सी लगी है, हम चलाते हैं सेलेस्टार क्वेरी। सेलेस्टार मतलब क्या होता है कि सारा डेटा लेके आओ, ये जो एम्प्लॉय टेबल है ना, इसमें से सारा डेटा लेके आओ, ऐसी आदत सी लगी है हमें कि यहाँ पे इंस्टेंस बेस्ड है। पहले ऑन प्रीमाइसेस पे क्या होता था कि इंस्टेंस बेस्ड रहता था कि जितना इंस्टेंस तुम लोगे उसके हिसाब से, वी आर नॉट वरीड अबाउट द अमाउंट ऑफ डेटा यू आर क्वेरिंग, वी आर नॉट वरीड, दे विल। बट नाउ डेज दिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स दे आर सेइंग तुमको जितना डेटा है रखना है रख लो, क्वेरी करना है कर लो, बट जितने अमाउंट का डेटा है उसके हिसाब से हम पैसा चार्ज करेंगे। सो ये तो ये हो रहा है कि अभी नए रोल आ रहे हैं इंडस्ट्री में भी। कैसे हो रहा है कि यहाँ पे तुम क्वेरी तो मार रहे हो, सपोज पहले मुझे आदत थी कि मैं बहुत बड़ी क्वेरी लिखूंगा और इस पे चलाऊंगा SQL सर्वर पे, ऑन प्रीमाइसेस वाले पे। तो यहाँ पे कुछ नए रोल आ रहे हैं, तो ये लोग इधर बैठेंगे और वो बोलेंगे कि क्या क्वेरी चला रहे हो उत्तरेश्वर भाई, आप दिखाओ मुझे क्या क्वेरी चला रहे हो। अगर ये क्वेरी तुम्हारा इतना डेटा स्कैन मार रही ना, तो हम नहीं अलाउ करेंगे ये क्वेरी मारने को, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड से वो बोलेंगे कि हम नहीं अलाउ करेंगे। तो अभी ये भी फंडा हो रहा है कि क्लाउड सबको अच्छा लगता है क्लाउड, लेकिन क्लाउड का ये क्या अच्छा नहीं लगता है, उसका बिल बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है इसका। तो देयर आर डिफरेंट रोल्स कमिंग। सो जो मतलब नहीं क्या, एक क्वेरी लिखे, सपोज तुम एज अ बिगिनर एक क्वेरी लिखोगे, लेकिन वो क्वेरी फिर एक एक्सपर्ट पर्सन हु इज़ लाइक ऑप्टिमाइज, हु विल डू द ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई ये क्वेरी ऐसी नहीं चलेगी, जब जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही चलेगी, या तो फिर नहीं चलेगी, तुमको जो करना है कर लो। वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं अभी। नाउ दीज आर आल्सो कमिंग इनटू द पिक्चर। सो दिस इज हाउ रोल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। सपोज दिस वाज नॉट द रोल अर्लियर कि ऑप्टिमाइज करने वाला कोई बंदा नहीं था, लेकिन अभी उसका भी हायर चल रहा है कि उसको सब आना चाहिए, SQL आना चाहिए, तूफान SQL आना चाहिए, बहुत सारी ये जो सीधी क्वेरी लिखी है उसको ऑप्टिमाइज करते आना चाहिए। So that was the whole point. Okay, so this was for the memory allocation. I diverted a lot, but that was good point to cover. On premises क्या होता है और क्लाउड पे क्या होता है, और उसके जो इसके भी हर चीज़ की टू साइड्स होते हैं। या तो एडवांटेज होता है, एडवांटेज होती है या डिसएडवांटेज, मतलब दोनों एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि सब बना बनाया मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रहा है, कहाँ पे भी जाओ तुम्हारा डेटा USA में रखो, तुम्हारा डेटा यूरोप में रखो, 10 जगह रखना है 10 जगह रखो। तो ऑन प्रीमाइसेस में ऐसे नहीं होता था, तो उसके पर्टिकुलर इंस्टेंसेस थे और उस पर ही डेटा रहता था। लेकिन क्लाउड पे यहाँ पे रिप्लिकेशन होता है। सपोज यहाँ पे एक रखा है ना, 1 GB डेटा यहाँ पे रखा है, और फिर किसी को डर लगता है कि भाई अगर कुछ कांड हो गया तो यहाँ का 1 DB डेटा तो चला गया, तो फिर हमें कहाँ से डेटा मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि हमारे एक और जगह रखो। यहाँ पे तुम सपोज मान लो कि यूरोप में रखा है, तो वो बोलेगी कि यार यूरोप में तो कुछ गलती से उड़ गया डेटा, तो क्या हम क्या करेंगे, फिर क्या रो दे क्या,
वो बोलेंगे नहीं नहीं हम आपका डेटा यूएसए में भी रखेंगे। तो उसके क्लाउड के रीजन्स रहते हैं, उस रीजन्स के हिसाब से या ऐसे डेटा रखा जाता है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द bit is just a simple one or two just a flag kind of data type. Tiny int, suppose आपका रिक्वायरमेंट ये है कि 3 डिजिट तक ही डेटा रखना है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दिस नंबर। सो सपोज मान लो कि आपकी डेटा की रेंज है -3000 टू 3000, इसके बीच में ही है तुम्हारा डेटा, मतलब आने वाले है जो वैल्यूज। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय आईडी है तो 3000 ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो वाई वी विल असाइन इट एज इंट और बिग इंट, बिकॉज इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी। सो उस हिसाब से टाइनी इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर्स रहते हैं, स्मॉलर नंबर्स एग्जैक्टली वी नो नीड टू रिमेंबर द रेंज वेयर, बट इंटीजर रहते हैं कि हम वो बोलेंगे कि हम 7 डिजिट तक अलाउ करेंगे, 7 डिजिट तक हो तुम रख सकते हो। तो बिग इंट बोलेगा मेरे मेरे पास तो भाई जितना रखना है रख लो, जितने भी मतलब नहीं क्या जितना भी लेंथ का डेटा रखना है उतना रख लो। तो फिर यहाँ वहाँ पे आ जाते हैं बिग इंट, और फिर आ जाता है डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है बेसिकली कि सपोज एक ये है, अब मान लो कि आपको ये प्रिसीजन चाहिए। प्रिसीजन क्या होता है एग्जैक्टली, सपोज वी हैव 10.25। ओके, सपोज तुम इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं गोल्ड वाला। सपोज गोल्ड वाला, और गोल्ड तुम रख रहे हो केजी में। ओके, सो हाई लेवल पे रखो कि हम तो केजी में नहीं रख सकते, फिर हाई लेवल पे रखो कि यहाँ पे प्रिसीजन कितना चाहिए। सपोज वी आर कीपिंग 10.25 ऑफ केजी एंड वी कीप प्रिसीजन एज ए 2 डेसिमल्स। मीन्स मैंने ये रखा कि 10 केजी और 25 क्या होगा फिर वो 250 ग्राम होगा ना वो। 10.25 kg मीन्स 250 ग्राम। और फिर उसके बाद ये तो हो गया कि 10 10 केजी एंड 25 250। तो प्रिसीजन कैसे मैटर करता है कि 250 ग्राम्स। ओके, और यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा कि यहाँ पे 250, यहाँ पे ऐसे लिखा कि वो 10 kg एंड 250 ग्राम, एंड हियर आई जस्ट रोट इट एज अ 10 kg एंड 25 ग्राम, दैट इज द प्रिसीजन आई हैव। सो इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस, राइट। सपोज तुम देख रहे हो कि 10.25, how precision is here mentioned, so that there comes the point of decimal. So I think pretty clear from this like how this precision matters। तो अगर तुम यहाँ पे 0 रख रहे हो एक, तो वो बन जाएगा कि 250 ग्राम्स, और या तो फिर वो बन जाएगा 25 ग्राम। सो इट मैटर्स अलॉट व्हेन प्रिसीजन कम्स। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे हो जाता है कि डेसिमल। मुझे वो डेसिमल में वो बोलता है कि मेरे को बताओ तुम कि डेसिमल जैसे कैर और वैर कैर में अपने लिखा ना कि कैसे लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन पूरा कर देते हैं कि कितना लेंथ चाहिए। यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे को पहले डिजिट कितने लेने हैं तुमको बताओ, और उसके बाद में मेरे को ये बताओ कि कहाँ कितने पॉइंटर तक मुझे एक्यूरेसी रखनी है। तो उसके सपोज सपोज आई डिफाइन इट एज लाइक डेसिमल 5 and length should be the like after this point how much should be the length। okay, so I should consider। so ऐसे मान लो कि सपोज 10.10.250 okay something, that's if you define here then it will round up to 2569। ओके, सो 5, अगर 5 बता दिए आप तो वहाँ तक वो ये कर देगा, उसको प्रिसीजन रखेगा उसका। और फिर अगर बाद में आते हैं फ्लोट पे वो बोलेगा कि बस मुझे फ्लोट जहाँ पे वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सपोज आपको अप्रॉक्सीमेट करना है, राउंड अबाउट करना है कि सपोज मान लो कि ये है कि 10.89 है, 10.89। तो वो बोलेगा कि यार 10.89 मत लिखो तुम सीधा, या तो अगर ये 10.85 के ऊपर जा रहा है तो या फिर सीधा तुम ये लिखो
10.9 लिखो, या फिर अगर वो 10.85 के नीचे जा रहा है तो सिर्फ सीधा तुम लिखो 10.8. So here comes the float. So float is used to make it like approximate values, but in case of decimal it is used to increase the precision or accuracy. These are the like data types in the SQL. So do remember these data types. We have for now just left with the date type data type, like date and time date type. We will cover in the tomorrow session, guys. That will be covered for tomorrow. For now, this is the it for today. If you have any question, guys, let me know. It was easy, right? It's not rocket science, but do one thing: get this SQL Server installed. Okay, just I already told you how to do. Just go to the Microsoft here. Go to the any tab, any browser, and search the SQL Server download. Okay, and then we will directly go to the Microsoft website, and then go to the latest version or somewhere. So down we'll go to the downloads and head to the SQL Server. You will see somewhere here. Then download now and then get it installed. Okay, that is very important, guys. Tomorrow, so my battery is also running out. So get it installed for tomorrow. If anyone of you is not able to install